morning, students. Welcome in our Maths 7th class. Math class is there. Welcome to all. Good morning. I hope you all are good and enjoying your holidays. Now we are going to start our today's maths lecture. Today we are going to do the sums and problems related to circle, the area of circle, circumference of circle, and their related problems. So I hope you have enjoyed the last video also. I hope you will understand this also. So for this you need the your stationary things, and you have to open our exercise number 14.3 from our math book. So we will learn together today exercise 14.3, area of circle and circumference of circle. Area of circle is in the area of circle, that is pi r square. Now this pi, this have the value 22/7, approximate value which we are using in all the sums, and circumference is equals to 2 pi r. Here again pi we are using 22/7. This is a common pi which we are using. Otherwise we are using pi equals to 3.14 also, but this we will use in higher classes, not in 7th class mostly. If in any sum that is given there is need of pi equals to 3.14, then only we are using. Otherwise, if the radius or diameter will cut with 7, then we are using 22/7 for the easy cutting. Let's start the first sum. First sum is find the circumference of circle. Here we have two sums. We will do one by one. First is given radius. Recently I have told you the formula for circumference of circle, 2 pi r. 2 pi r, here we have the radius 21, pi's value is 22/7, radius is 21 mm. Now we will do the cutting with 7's table, 3 and 3 2s are 6, 22 6 are 132 mm. You all know the multiplication, you will find the correct answer. Then diameter. If diameter is given, formula will be same, but it is little bit different like this. Pi, if we are writing like this, and we will write 2r, and I think you all know that diameter equals to 2 times radius, means d equals to 2 times r. This may be all knows very well. It means we can put here directly pi d. It means we can put directly the value pi 22/7, and d is 14, and 7 2s are 14, and 44 your answer. I hope you all understand. If radius given, if diameter given, how we can find the circumference of the circle. The same formula we are using with little bit different, 2 pi r. If d is given, we will use pi d. Meaning is same because d is 2r. Understand? I hope you understand this sum. We will move to the next, the second sum. Again 2 parts, and we will part our this slide in 2 parts. Given is the radius equals to 20 centimeter. Area we need to find. Now I have already told you. The formula is pi r square. Formula is pi r square, and we know the value of pi, that is 22/7. Now square means we have to write value 2 times. Now here it is not possible to cut on the table of 7, and we will multiply the upwards, that is 8800, and divide by 7. Over means divide.
Some students are getting confusion in this. You need to understand that over means divide. It means which is numerator that we are putting inside and dividing by denominator. This is the meaning of the fraction. So you have to find the answer. You will divide and this will be when you are dividing it with 7. Next same hai, but there is given diameter. In the area sums we need to find firstly radius. Diameter given, radius equals to diameter 2r hai. Then radius, oh okay, d divide by 2 we will find. Now r 42 divide by 2, that is 21 centimeter, that is radius. Again we can use the same formula and you will find the answers. Pi r square by putting the value 22 over 7 r into r means 21 into 21. You will find the answer. Here is given, but in exam it is not given ke pi equals to take this and that and all. Okay, so we will move to the next sum with the next slide. Find the radius of a circle. Now circumference is given. The opposite thing is given. We need to find the radius. Firstly, we have given with the radius. We have find the circumference. But formula. I hope okay, this will be same 2 pi r. C equals to 2 pi r. And we know that we have to find, but we know the value of 22 over 7, that is of pi. R we need to find, that is 39.6 centimeter, and R will be 39.6 into 7 over 2 into 22. After cutting, after doing the simplification, we will find our answer over 10, because there is decimal. Here will be 44. If here is 44, after cutting on the table, any table you can cut which is found to be easy, we can cut. So I think I can cut on 4. 4 nines are 36, 4 nines are 36. Here is 11 and 11 nines are, and 9 sevens are 63. 10 over 8 means we will put the decimal here, 6.3. In this way, here 2 into 22 over 7, so this will be 7 over 22 on the either side. It will not be same. You are going to do this mistake again and again. You are putting here also 22 over 7 and you not got your answer there. Understand? Next, fourth, ratio of the circumference. The next slide with the next sum. Find the ratio of the circumferences of two circles. Ratio of radii is given. What is given? Ratio of radii. We need to find the ratio of circumference. Ratio, I hope you understand. Firstly, we are putting some values in the type of fraction, and then we are putting them in the ratio. Ratio, the sign is double dot, and now given is ratio of radius. तो लेट करते हैं रेडियस. रेडियस को लेट करेंगे 4x and 5x. Now 4x is smaller circle, smaller radius. 5x is greater circle with greatest radius. Now we have to find ratio of circumference. What ratio we need to find? That is C1 over C2. I hope this will be R1. This will be R2. So we need to find it. We will write that it is 2 pi r, and it is also 2 pi r. I hope we not need to put the value of pi, because we can cut. 22 over 7 लिखेंगे तो भी कट करेंगे, सीधा पाई से पाई कट कर देते हैं ना, हमने को फिल करना है. And this is very simple sum. 4 ratio 5 is the similar answer we got.
Ratio of circumference is also same. Ratio of radii is same, because 2 pi that will be cut. There is no other multiplication, and we got the ratio. The next slide is with the fifth sum. It have two parts, A and B. We will do part wise. First is given the inner circumference of a circular track. Now we need to draw one circle. If we have drawn like this, sorry, this is a little bit wrong. Inner circumference and outer. Here is two circles with one center. It means this is given. And this track is 7 meter wide. It is given. We need to find from the inner circumference the radius of small inner circumference track. And we will calculate the outer and area of track also. First thing क्या है? 2 pi r, that is given 176. 2 into, we need to find the inner radius. We are taking the small radius r and greater radius capital. Here r is 176 into 7 over 2 into 22. Understand? So now we will cut it with 2. It is 88 and 22. 4 ja 88. R is, we are getting 28. Now this is R. This is the inner radius. Inner radius. Here is 7 meter wide track also. It means it is total longest R. Means outer radius, it will be greater than the smaller radius plus 7, that is 35 meter. Now we got two radius. Radius 1, radius 2, outer radius we are denoting with capital R, smaller radius we are denoting with smaller. We need to find this one area of track. It means if we are subtracting the smaller area from the bigger area, we will got our answer. So simply we will write area of track equals to area of bigger circle minus area of smaller circle. Bigger circle capital R, smaller circle small r. We can take the common pi, and r is 35 square minus 28 square. Now if we note, we are not going with the longer method. We have some simple method, a square minus b square. One time plus एंड वन टाइम माइनस, दोनों की मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल ही होता है. सो हमें ना तो 35 का स्क्वायर इतना लंबा चौड़ा निकालना पड़ेगा, ना ही 28 का. We can simply use this formula for our convenience. This simple formula will help you in many calculations when you got this type of calculation. Now we are putting the value of pi, 22 over 7, 35 plus 28, it will be 63, and it will be 7. 7 will cut with 7, and we will multiply 63 by 22, and we got our answer 1386 meters square. Now we got the area of track with this way. Otherwise, some students liked going with the longer method. You can find firstly greater circle area, then you can find smaller circle area, and then you are going to subtract. Answer will be same, there will be no difference, but wastage of time would be there. If you forget by chance this formula, you can go with that कि 35 square निकालो, then 28 square निकालो, दोनों को subtraction करो, then cutting करो, and then you will find the answer. You can go with any method which you are finding it is easy for you, but this is very simple method which I told you. Now what is in B, we will see. Again, here is statement I have written because I have to check what is in the B, what is interrelation of that. What is cost of putting up a fence along the outer circle? Now, in the previous slide, we have find the bigger radius R. So, outer circle के लिए we need the bigger circle 35 meter. Clear?
that is 35. Now fence. Fence means we have to put some wire, some like दीवार खड़ी करनी है आपको इसके साइड पे. Fence means दीवार होता है proper meaning. So we need to find the circumference because area means cover all things. If we have to put tiles, we have to paint and all other things, then we are using the concept area. If we have to put something outside, we have to fence it, we have to put a wire on it, then we are going with that circumference. Circumference means the length of the circle, means perimeter word we are using in square and rectangle, and in circle we are using the word circumference, meaning is same. And if we have to find the cost, we need to find firstly the circumference. 2 pi r, that is 2 into 22 over 7 into 35, and then simply calculating the values we can find 220. Now here is the short trick how I find by seeing 220. You have to check when you have to multiply. If there is 5 and 2 collectively you got, you will multiply firstly 5 to the 10. We know that 22 tens are 220, simply 0 you have to put. No calculation required, just oral vision. You have to improve your that key, you can see, then you can simplify the answer. You need to go with that calculation, that type of calculation. Now cost for 1 meter, that is given 12. ये तो सभी को पता है. अगर एक के लिए दी है we have 220 मीटर सॉरी, तो you have to multiply. and multiply मेरे ख्याल से आपको आती है अच्छी तरह से, तो आप सिंपली आंसर फाइंड कर लोगे. इसमें भी आपको पूरा 220 से करने की जरूरत नहीं होती है. अगर आपको 12 का टेबल आता है, आप इसको सिंपली 12 लिखोगे. 12 2 24 सभी को पता है. 12 2 24 प्लस 4 कितना आएगा 26. 264 आ गया, एक जीरो इधर पड़ी है उसको लगा दिया साथ में, आंसर आ गया. नो लॉन्ग कैलकुलेशन, नथिंग. You will use your brain properly, then you not need to do any longer calculation, not any requirement. and इसमें फायदा क्या होगा आपको, गलती का चांस भी कम हो जाएगा. आपकी यही सिली मिस्टेक होती है, ये सिली मिस्टेक्स आपकी बहुत कम हो जाएगी. क्लियर? ओके, नाउ वी आर गोइंग विद द सिक्स्थ सम. सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स, वर्ड का मतलब है कि ये वाला सर्कमफ्रेंस है रेडियस से 37 सेंटीमीटर ज्यादा है. एक्सीड्स वर्ड मीन्स वो उसको उससे इतना ज्यादा एक्सीड करता है, उतने नंबर से वो ज्यादा है. तो अभी सर्कमफ्रेंस पता ही है, वैसे तो रेडियस से सर्कमफ्रेंस ज्यादा होगा, तो उसको माइनस कर देंगे. 37 आ गया. अब हमारे पास पाई की वैल्यू है अकेले की, तो पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं. जब हमने पाई की वैल्यू पुट की थी, हमें पता चला कि ये आर तो कॉमन निकल रहा है भाई, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं. तो ये बन गया आपके पास ये ऐसे. अब ये 1 है, 1/7 बनाना पड़ेगा एलसीएम लेके. ये बन गया 744 माइनस ये बन गया 7/7. आर आ गया आपके पास 37. नाउ 44 माइनस 7/7, ये आ गया सिंपली आर. आर आपके पास, अभी ये हमें पता है कि ये भी 37 आने वाला है, तो ये तो कट हो गया. ये तो भाई बहुत ही सिंपल आ गया. सी आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. मीन्स अगर आपको ये आता है, आपको फ्रैक्शन टॉपिक आता है, तो यहाँ से आप देख सकते हो इंटररिलेशन है. सो यू रिक्वायर एनी, एंड आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए एक्सीड्स वर्ड का मतलब पता करने के लिए. सो दिस from here you can see all subjects are interrelated, all things are interrelated, all chapters are interrelated. So never leave any chapter okay, this is important, this is not important. Okay, so now we are moving with the next slide, and here comes our seventh sum. Seventh sum, what is given? The diameter, what is statement? Firstly we will write diameter of a wheel of a bus is 112 centimeter. How many revolutions
मीन्स कितने सर्कल, कितने चक्कर काटने के बाद ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज गिवन इन 1 किलोमीटर 56 meters. Higher quantity and diameter of wheel is in centimeter. Firstly we make one wheel, sorry that is little bit wrong. तो आपके पास ऐसे व्हील होता है, व्हील बना लेते हैं। ओके, तो आपके पास है यहाँ पे डायमीटर ऑफ व्हील। पहली बात तो हमें चाहिए सर्कमफ्रेंस, बिकॉज डिस्टेंस कवर्ड इन 1 revolution, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 revolution आएगा किसके इक्वल? सर्कमफ्रेंस। इसके इक्वल आएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल है? 2πr। इसको हम लिख सकते हैं पाई डीबी। ये तो हमने फर्स्ट सम में सीख लिया था कि पाई डीबी होता है। तो हम सिंपल पे जाएंगे, हम क्यों पहले डी से आर निकालेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमें मल्टीप्लाई किया तो यह मिल रहा है, तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। वी आर नॉट गोइंग विद दैट मेथड। दिस इज 16 7 जा। तो आपके पास आ गया ये। अब आपको अगर 16 का टेबल आता है तो 16 2 या 32, 2 यहाँ पे लिख लो, 3 अपने ब्रेन में रखो। 16 2 या 32 प्लस 3 35, 352 आंसर। नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, नो एरर विल बी देयर। अब डिस्टेंस क्या है भाई? डिस्टेंस है किलोमीटर एंड मीटर में, तो आपको आपका सरकमफ्रेंस आया सेंटीमीटर में। ऑब्वियस है कि क्वांटिटी विल बी सेम फॉर डिवाइडिंग, because revolution, number of revolution, number how many revolutions, this we can find by the division. This simple thing you understand by the statement only, but it should be in the same quantity, same unit, and it is not in same, so we need to change. And अगर आपको भी पता है कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने हैं, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने हैं, तो हम कन्वर्ट करेंगे। पहले हम सारी स्टेटमेंट को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। 56 ऑलरेडी गिवन, ये बन गया 1056 मीटर। नाउ इट इज मीटर, बट हियर इज सेंटीमीटर, एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। We will use this. We will multiply by 100. This is in centimeter. Total distance covered. पूरा आप आगे उसके लिखोगे total distance covered, उसको फिर quantity change करो, then number of revolution पे जाओगे। सीधा करोगे सम गलत होगा, because without same units we can't divide, we can't multiply, we can't add, subtract. We first requirement of ours is quantity will be same, डिवाइड एंड कटिंग विल बी सेम। अगर उस हिसाब से देखें तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट भी होना चाहिए, तो वैसे समझ लो चाहे वैसे समझो। नाउ वी कैन सिंपली डू कटिंग। 176 यहाँ पे आ जाएगा 52800, अगेन 8 यहाँ पे 26400। I think again you quite, and you can go with the bigger table also if you find के ये आ सकता है। then आ गया 22, here is 6600। अब ये तो डायरेक्ट पता ही है 22 3 आंसर इज 300। आप अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हो जैसे आपको इजी लगता है। चाहे आप सीधे 4 पे चेक कर लो, पहले 4 पे चेक करके कटिंग कर लो, 8 पे कर लो। किसी को सीधा दिख रहा है कि 352 मेरे ख्याल से 3 टाइम्स बन रहा है, क्योंकि 3 3 9 1 तो फिर ज़्यादा आ सकता है, 10 बन गया वहाँ पे, एंड 2 का भी 6 बन रहा है। तो कोई स्मार्ट करेगा जो, वो 352 को भी सीधा 3 से मल्टीप्लाई करके सीधी कटिंग भी आप कर सकते हो, सीधा डिवाइड भी कर सकते हो अगर किसी को कटिंग में प्रॉब्लम है। वैसे तो यू आर इन 7th क्लास, I think there will be no problem of cutting now. If you have, you can go with division method also, if you are not able to do cutting.
Okay, I hope you understand this sum, and if you find there is some confusion, you will find, and you will we will go with that in our tomorrow's classroom, then you will discuss here. Okay, and these sums you have to do on FNB also, and for that I am making the PDF. I will send you. Okay, for the next sum, the eighth sum of ours, the circumferences of two circles. अब ratio of circumferences is given, ratio of areas we need to find. अब circumferences का ratio given है, it means C1 and C2 का ratio given. C1 अब क्या है भाई, 2 pi R1 and 2 pi R2 ले लेते हैं. अब 2 pi वैल्यू भरने की जरूरत नहीं है, R1 का R2 से रेशियो निकल के आ गया. क्लियर, R1 over R2 रहने देते हैं. Now we have to find the ratio of their areas, means area of 1, area of 2. Area of 1 अभी, area of 1 pi R1 square over pi R2 square. Pi will be cut with pi. R1 and R2 we can write R1 over R2, or you can take small r capital R also. Both things same, no problem. 1 over 2 square, that is 1 over 2. Sorry, here is 1 over 3. Sorry for that. 1 over 3. Here will be 1 over 9. And ratio of areas, area 1, area 2 ratio 1 ratio 9. This is your answer. देखने में सम इतना डिफिकल्ट लग रहा है, रेशियो कहाँ से निकालेंगे, कैसे करेंगे, बट जब आप कर रहे हो दैट इज़ वेरी इजी. सो डरना नहीं है. स्टेटमेंट देख के पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, देन यू कैन डू द सम. Clear? Next, ninth sum. This sum is little bit long. We will take 5-6 minutes for that. Okay. So the answer देखना है. Copper wire in the form of a circle. पहले तो एक वायर का बनाया सर्कल, उसका एरिया दिया है, मतलब वायर का एरिया मीन्स एरिया किसका दिया है, सर्कल का, दैट इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब वही वायर अगर हम सीधी कर दें, सीधी करके उसका क्या बना दिया उसने, स्क्वायर. पहले सीधी की, देन उसका बनाया स्क्वायर. तो इस स्क्वायर का हमने निकालना है एरिया. अब यहाँ से एक बात तो क्लियर होगी, उतनी तार इसमें लगी, उतनी तार इसमें लगी, इसका मतलब दोनों का सरकमफ्रेंस सेम है. सरकमफ्रेंस यू आर अंडरस्टैंडिंग ना, इसका सरकमफ्रेंस इसके पेरीमीटर के इक्वल है. पेरीमीटर एंड सरकमफ्रेंस वर्ड यहाँ पे हम सेम लेते हैं. ओके, सरकमफ्रेंस एंड पेरीमीटर वर्ड सेम लेंगे, तो उसका सरकमफ्रेंस उसका पेरीमीटर के इक्वल है, ये बात क्लियर है. अब सर्कल का एरिया दिया है तो हमें रेडियस निकालना पड़ेगा. रेडियस निकालने के लिए हमें पहले पाई लगानी पड़ेगी. तो पाई की वैल्यू 22/7 है. आर स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं, 616 आ गया. आर स्क्वायर आपका आ गया 616 इंटू 7/22. वी कैन गो विद टेबल ऑफ 2, 3, 0, 8. 11 पे ये जाएगा, यू कैन फाइंड बाय डिवीजन. 28 इंटू 7. अब 28 का बना सकते हैं 4 इंटू 7 इंटू 7. अब 4 का तो 2 इंटू 2 बन जाएगा. ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, 2 2 का पेयर बना लेते हैं. ये बन गया 2 इंटू 7 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है. तो ये बन गया आपके पास 14 का स्क्वायर, मतलब आर क्या आ गया आपके पास 14. अभी तक हमने निकाला है आर. ये आर है जो रेडियस ऑफ सर्कल है. अब हमारे पास दोनों एक ही वायर से बने हैं, स्क्वायर भी सर्कल भी. तो हमारे पास जो इसका सरकमफ्रेंस है सर्कल का एंड इसका जो पेरीमीटर है वो दोनों है सेम. तो उसके पेरीमीटर के लिए यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा इसका सरकमफ्रेंस. तो R14 लेके हम लोग निकालेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. 2 इंटू 22/7 इंटू 14 या 2 जा 4, 22 4 जा आ गया आपके पास 88. अब आपका आ गया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल. अब मैंने आपको पहले ही बताया कि सेम वायर यूज्ड है. आप लोग लाइन लिखोगे भी जब आप पेपर में करोगे सम या फेयर कॉपी पे करोगे,
आप ये लाइन लिखोगे कि बिकॉज सेम वायर यूज टू फॉर्म अ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसका मतलब ये है जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 88 आ गया आपके पास। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड 88 है, तो साइड कैसे निकालोगे, दैट इज 88 डिवाइड बाय 4, तो साइड आपके पास आ गया है 22। यहाँ तक क्लियर है। आफ्टर दैट अब पूछा क्या है, अगेन गोइंग फॉर दैट, if the same wire is bent to form a square, find its area. We need to find its area, that is side into side. So that is 22 into 22, that is 484 centimeters square. Now the last sum of this exercise, 10th sum, two circles, डायग्राम दी है आपको अच्छे से, ये इसका शेडेड एरिया है, तो ये हमने निकालना है शेडेड पार्ट का एरिया। Two circles are drawn inside a big circle of diameter 24 centimeter. Diameter of the two circles are 1/3 and 2/3 of the diameter of the big circle as shown in the adjoining figure. We need to find the area of the shaded part. Now diameter is given. First of all find the radius, that will be divided by 2, 12 centimeter. Radius we find. अब एरिया ऑफ बिगर सर्कल चाहे पहले निकाल लो चाहे बाद में निकाल लेना। आई एम फाइंडिंग फर्स्टली एरिया ऑफ बिगर सर्कल, दैट इज 12 इंटू 12, पाई साथ में आएगी, तो पाई को पाई रख लेते हैं, 144। ओके, आफ्टर दैट डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल्स के लिए क्या दिया है उन्होंने, पहले d1 d2 लिख लेते हैं इनको। d1 गिवन है 1/3 of the diameter of big circle, d2 given है 2/3 of the diameter, we will do cutting, diameter is 8, तो radius 1 क्या आ जाएगा 4, simple divide by 2, this is 8, 8 2 is 16, radius 2 आ गया 8। अब इन दोनों का एरिया निकाल लेते हैं, स्मॉलर सर्कल्स का एरिया 1 आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर 1 स्क्वायर, पाई इंटू 4 स्क्वायर 16 पाई, एरिया ऑफ 2 पाई आर 2 स्क्वायर, पाई इंटू 8 स्क्वायर, that is 64 pi. Now we have to find the area of shaded part. We have find the area of bigger circle, we have found the area of smaller circles, क्या फाइंड करने वाला रह गया, शेडेड पार्ट। तो शेडेड पार्ट का एरिया बिगर सर्कल माइनस स्मॉलर स्मॉलर, बिगर 144 पाई, अब मैंने पाई इसीलिए रखी बिकॉज वी कैन फाइंड इट कॉमन, 16 पाई प्लस 64 पाई, सम ऑफ बोथ that is 80 pi and here left 64। आप चाहो तो इसको इधर भी छोड़ सकते हैं, इफ दे आर आस्किंग के इन फाइंड द एरिया इन टर्म्स ऑफ पाई, otherwise we can put the value of pi also, that will be 22/7, 64 को मल्टीप्लाई करोगे 22 से 148 आ जाएगा, 7 से डिवाइड कर लोगे। These are the simple calculations you can do. I hope you understand this sum also. शेडर रीजन अगर आ जाए कुछ भी तो आपको बिगर थिंग का निकाल के स्मॉलर का माइनस कर देना। Clear? I hope all understand these sums very well. You can do on your FNB also properly, and I will share you PDF also. I hope you are understanding better. And with this, our math class is going to be over for the today. Okay, thank you. See you after holiday.